Assalamu alaikum. My name is Talha Tariq, and today my purpose of this video is to record and show all the tasks that we have done in the lab, in the microcontroller and embedded system lab. So सारी लैब्स तो हमने परफॉर्म की थी, लेकिन कुछ की सिमुलेशन हमसे रन नहीं हुई थी। तो 2-3 लैब्स के अलावा सारी लैब्स की वीडियोस मैंने बनाई हैं और उसमें अपलोड की हैं। और हम शुरू करते हैं लैब 1 से। मैनुअल में आपको पहले कोड भी चेक कराया क्योंकि लैब वन बेसिकली इंट्रोडक्शन था कि प्रोटीज को इंस्टॉल कैसे करना है, एटमल को इंस्टॉल कैसे करना है, एंड अर्डिनो को, और उस पर कोड वगैरह रन करके मतलब सिंपल वो इंट्रोडक्शन से कह सकते हैं कि प्रोटीज का और उसका एटमल का और अर्डिनो का इंट्रोडक्शन था। बेसिकली शुरू में सर ने शुरू में ये बताया था कि इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, और सिंपली तो स्टेप्स लिखे हुए हैं, सिंपली इंस्टॉल करने के स्टेप्स हैं कि आपने इंस्टॉल कैसे करना है। तो लैब 1 कोई इतनी खास कोई एक्सप्लेन करने वाली नहीं है, इसमें बस सिंपली ये लिखा हुआ है कि आपने स्टेप लिखे हुए हैं कि इंस्टॉलेशन के स्टेप्स लिखे हुए हैं कि हमने इंस्टॉल कैसे करना है। और उसके बाद एंड पे छोटे से टास्क है जो आई थिंक ब्लिंक का टास्क है, जो बेसिकली सर ने कोड दिया हुआ था, हमने उसी को रन करना था उसको। और मैं आपको कोड दिखा भी देता हूँ। So basically this was a blink code, which basically turns on LED on for 1 second and then off for 1 second repeatedly. तो LED को वो ऑन करता था then ऑफ करता था। तो बेसिकली ये सिंपल सा एक कोड है जिसमें हमारे पास वो ऑन करता है, फिर वो डिले डालता है 1 सेकंड का, देन दोबारा ऑफ करता है, फिर डिले, इस तरह ये लूप चलती रहती है रिपीटेडली। तो बेसिकली लैब 1 में हमारे पास यही दो टास्क थे। कंक्लूजन में भी लिखा हुआ है कि वी हैव टू लर्न दैट हाउ टू यूज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल्स सच एज Arduino, AVR, स्टूडियो एंड प्रोटियस। और हम पे सिंपली हमें कोड करना सिखाया सी पे और असेंबली लैंग्वेज पे, वो मैंने आपको शो। तो लैब 2 पे आते हैं। लैब 2 बेसिकली मैं भी यही चाह रहा हूँ कि लैब 2 की टास्क यहाँ पे मैं जो सर ने अपलोड किए हैं वो भी आपको दिखा दूँ, ताकि उसको हम लेके साथ साथ चलें। देन साथ में फाइल ओपन करूँ सर्वरली और साथ में आपको अपने टास्क भी दिखा दूँ। और यहाँ पे लैब 2 का नहीं मिल रहा, लैब 3, ये लैब 2 टास्क, लैब 2 एक्टिविटीज़, ओके। सो ये इसमें टोटल हमारे पास 5 एक्टिविटीज़ हैं। So let's start with activity number 1. So activity number 1 थी इसकी कि store 13 or 16 binary and display it on any port. And then after at 25 in that value, show the result on any port, clear R16, show simulation and Atmel Studio. तो हमने बेसिकली इस पे सिमुलेशन दिखानी है एटमल स्टूडियो पे, और ये बेसिकली टेक एन इनपुट फ्रॉम वन पोर्ट एंड डिस्प्ले इट ऑन अदर, सिमुलेट ऑन एटमल स्टूडियो एज वेल एज प्रोटियस, and display charging sequence of LEDs on any port simulate on atmosphere। तो बेसिकली हमारे पास ये सारे टास्क हैं जो हमने प्रोटीज पे शो कराने हैं। लेट्स स्टार्ट विद टास्क नंबर 1। So lab 2 task, okay. So let's start with okay, lab number 2। It is not copying। ओके, सो हमारे पास ये टास्क आ गए हैं।
लैब 1 के मैंने आपको दिखा दिए थे सारे कोड वगैरह। बेसिकली ये ब्लिंक के कोड ही हैं जो सिंपल बस कोड रन करना हमें बताया गया था। लैब 2 के टास्क 1 पे आते हैं, टास्क नंबर 1। तो बेसिकली यही हमारे पास टास्क है इसमें, जो आपको मैंने पहले भी दिखाया था। आई विल शो यू अगेन के store 13 or 16 in binary and display it on any port. After that, add 25 in that value and show result on any port. And clear the R16 so simulation in Atmel Studio. तो हमने ये यहाँ पे लैब 2 टास्क 1 ओके। तो बेसिकली हमने यही एटमल पे हमारा कोड है कि शुरू में इसने स्टोर 30 की R16 में एंड देन स्टोर 25 इन R17 एंड देन डिस्प्ले रिजल्ट ऑन पोर्ट बी। और देन इसमें हमने कहा था कि क्लिड ऑसिंग सो सिमुलेशन इन एटमल स्टूडियो। देन हमारे पास जो टास्क नंबर 2 है वो है टेक एन इनपुट फ्रॉम वन पोर्ट एंड डिस्प्ले इट ऑन अदर एंड सिमुलेट ऑन एटमल स्टूडियो एज वेल एज प्रोटियस। सो हमारे पास लैब टास्क 2 का आ गया है। सो दिस इज टास्क 2। ओके, सो हमने ये सिमुलेशन जो है वो खोल रही है इस पर। बेसिकली इसमें हमें यही कहा है कि हमने एक पोर्ट से इनपुट लेनी है एंड उसको दूसरे पे हमने उसको डिस्प्ले करना है, जो कि मतलब इतना कोई मुश्किल काम नहीं है। चलिए हम अपनी सिमुलेशन रन करते हैं। ओके हेक्स फाइल, ओके हेक्स फाइल अपलोड की हमने, सॉरी फॉर दैट। लैब 2 टॉक्स 3, नो इट वाज टॉक्स 2। लैब 2 टॉक्स 2। ओके, तो हेक्स फाइल अपलोड होगी, अब हम रन करते हैं इसको। ओके, तो अब हमारी जो है वो चल रही है सिमुलेशन ठीक तरह से। तो ये 1 मिनट बेसिकली आप देख रहे हैं कि एलईडी जो है वो ऑन है। सो हमारा ये टास्क जो है वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। उसने बेसिकली ही कहा था कि आपने एक पोर्ट से इनपुट लेनी है एंड उसे दूसरे पे दिखाना है। तो हमारी ये सिमुलेशन ठीक है। देन हमारा जो टास्क 3 है, डिस्प्ले चार्जिंग सीक्वेंस ऑफ एलईडीज ऑन एनी पोर्ट।
एंड सिमुलेट टू नेटवर्क स्टूडियो एज वेल। ओके, हमने बेसिकली एलईडीज का चार्जिंग सीक्वेंस हमने किसी भी पोर्ट पे शो करना है। मतलब सीक्वेंस ये कि एक ऑन ऑफ हो रही है, इस तरह सीन चल रहा है। तो वो भी अपलोड कर लेते हैं। किधर गई? ओके, सो टास्क 3 आई गेस, यस। सो ओके, सो हेक्स फाइल इज अपलोडेड नाउ। अब इसको सिमुलेट करते हैं एंड देन इसका सीक्वेंस में जो क्लास था वो बेसिकली सिमुलेट हो रहा है। वो उसने हमसे यही पूछा था कि डिस्प्ले करना है चार्जिंग सीक्वेंस ऑफ एलईडीज ऑन एनी पोर्ट। तो ये हमारा सीक्वेंस जो है वो दिखा रहा है बिल्कुल सही तरह से। ओके, एंड देन द टास्क 4 है हमारे पास कि टेक टू वैल्यू फ्रॉम डिफरेंट पोर्ट्स, कंपेयर देम, and if both the values are same, show 0b11011 on third port, and if not equal, then okay, ये show करे, and simulate on Atmos Studio as well as Proteus. Okay, so lab task 4 अपने करते हैं। So I think is this not complete done? We have okay. फाइल इसकी अपलोडेड है कि नहीं? नहीं। So hex file is now uploaded. बेसिकली हमारे पास ये सही शो कर रहा है, सिमुलेशन इसकी भी हमारे पास ठीक है। क्योंकि हमें कह रहे हैं कि दो वैल्यू डिफरेंट पोर्ट से ले उसे कंपेयर करें एंड मतलब थर्ड पोर्ट पे ये शो करे। So left task 5 था कि implement following commands and write your comments about its function. So ये बेसिकली ये मतलब कहने के जनरल एक टास्क है जिसमें हमने फॉलोइंग कमांड्स को इम्प्लीमेंट करना है और उसके कमेंट्स हमने लिखना है। इसके फंक्शन के बारे में हमें कमेंट लिखना है कि ये कमांड एस टी एस टी एम पी एम ओ वी और ये जो कमांड है हमारे पास इनके क्या फंक्शन है। तो बेसिकली हमने यहाँ पे ये सारी कमांड जो उसने पूछी हुई है वो सब हमने बता दिया है, स्टार्टिंग विद कॉम के जो कॉम्प्लीमेंट द कंटेंट्स ऑफ R18 and then STS storing the data contents on given address, MOV copying the contents of R18 into R16 and storing them on R16, and then jump command है, and then we have STS command and INC, which basically increment the contents of R18 and EC with decrement the contents of R18. So हमारे पास लैब 2 के टास्क यहाँ पे ख़त्म होते हैं and then now we will start lab 3.
ओके, लैब 3. So this is lab 3 introduction to, so this is Zoom video. So starting with lab 3, सिंपली सर ने हमें शुरू में सर ने कोड एक्सप्लेन किए हैं कि आपने सी प्रोग्राम कैसे लिखना है. जो हमने पोर्ट बी को हमने वैल्यू सेंड करनी है 00 to FF. टास्क की तरफ आते हैं कि इसमें हमारे पास दो टास्क थे कि राइट अ कोड दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम पोर्ट बी एंड चेक्स वेदर द नंबर इज इवन और ऑड, and if the number is even then blink alternative LEDs of port C with a delay, and if the number is even then blink LED and port C one after another from LSB to MSB, and then write a code to monitor bit 5 of port C. If it is high then send bit 5S to port B, otherwise send AAS to port B. हम शुरू लैब टास्क 1 शुरू करते हैं. This is lab 3. तो बेसिकली जो सर ने दो हैंड आउट अपलोड किए हैं, एक हैंड आउट 1 एंड हैंड आउट 2, दोनों में हमारे पास दो दो टास्क हैं. तो इट इज ऑल फोर टास्क हियर, स्टार्टिंग विद द टास्क नंबर 1 ऑफ लैब 3. सो हियर, सो हमारे पास यही था कि अब पोर्ट बी से एक इनपुट लेना है और उसे हमने चेक करना है कि वो इवन है या ऑड है. तो इवन है तो हमने देन ब्लिंक एलईडीज हमने पोर्ट सी की अल्टरनेटिव ब्लिंक करवानी है विद अ डिले के साथ. सॉरी अगर इवन है ठीक है. ओके, और अगर इस नंबर इज इवन then blink LED at port C one after another from LSP to the blaze significant bit से हमने MSP तक हमने इसको blink करवाना है. So wow, माशाल्लाह. There we go. So बेसिकली देख रहे हैं ये डिस्प्ले हमारा बिल्कुल सही शो कर रहा है. हम पास अल्टरनेटिवली हमारे पास जो ब्लिंक है वो उसको मतलब शो कर रहा है यहाँ पे, और इट इज exactly true. Okay, now coming to that lab task 2, write a code to monitor bit 5 of port C. If it is high, then send 55S to port B, otherwise send AAS to port B. Okay, starting the first, let me close all the previous task. No. Okay, so we have to do lab 3 activity 2. So lab 3 activity 2, we have to start. Oh, sorry for the disturbance. घर में इस तरह वो आपको सुकून नहीं मिल सकता, एंड पाकिस्तानी घर हो तो यहाँ पे कमरे में इतनी खामोशी नहीं मिल सकती. क्या था यार, माइक्रो लैब्स लैब 3, और हमने इसमें इसके एक्स फाइल नहीं है. वाओ, सॉरी, हमने
इसका टास्क 2 कर रहे हैं ना, तो टास्क 2 में होगी लैब 3 here it is. wow wow ओके, सो इसकी मेरे पास एक्स फाइल इतनी बड़ी भी, वेरी गुड। प्रोटीज की सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, वे हमने ये रन की थी यूनिवर्सिटी में, लेकिन एक्स फाइल इसकी नहीं पड़ी हुई इधर। चलिए मैं आपको ऐसे दिखा देता हूँ कि एक्टिविटी 1 तो मैंने आपको दिखा दी है, चली थी एक्टिविटी 1 कैसे चली थी। ओके, सो बेसिकली इट इज रनिंग एनिमेटिंग, बिल्कुल सही हो रही है, लेकिन जो उसने कहा था वो कर रहा है टू कोड टू कोड बी। ओके, नाउ स्टार्टिंग द task number 3. Here it is handout 2. So basically इसके भी दो टास्क हैं। फर्स्ट है कि राइट अ प्रोग्राम फॉर एटमेका 328p और एटमेका 2560 to interface to 7 segments and make a counter from 0 to 99 with any delay। ये टास्क का स्टीलिंग रिवैम्प है जो हमने यूनिवर्सिटी में किया था और हार्डवेयर पे इसके बहुत इशूज आ रहे थे। देन ओके, मैं आपको इसका सबमिशन दिखा देता हूँ। ड्यूटी नंबर 3। So here it is, animating like a pro। देख लें, बेसिकली हमारा इसमें यही सर ने बताया कि इंटरफेस करना है 27 सेगमेंट को जो काउंटर डिस्प्ले करे, सॉरी काउंटर बनाए, विच इज वर्किंग फाइन। Now going into activity 4, basically lab 3 task 4, and write a code to interface the hex keypad with at mega 328p। now बात हुई है यहाँ पे हमने 27 सेगमेंट को इंटरफेस किया, तब हमने हेक्स कीपैड को एट मेगा के साथ इंटरफेस करना है। एंड ग्लो एनी रेडी विद इनपुट फ्रॉम एनी कीपैड बटन, मतलब आप कोई भी कीपैड से कोई बटन दबाए, एलईडी शुड बी ग्लो। ओके, स्टार्टिंग एक्टिविटी 4। तो बेसिकली हमने ये कह रहे हैं कि हम कोई भी यहाँ पे इसको इनपुट दे रहे हैं तो इट इज़ ग्लोइंग। बेसिकली हमारे पास ये हेक्स की पैड के तौर पे ये है कि हम कोई भी इसको इनपुट दे रहे हैं तो एलईडी ग्लो कर रही है हमारे पास, तो इट इज़ आल्सो वर्किंग फाइन। ओके, तो वो स्टॉप है। नाउ वी क्लोज ऑल द सिमुलेशन ऑफ लैब 3 बिकॉज अभी लैब 4 शुरू होने लगी है। नहीं करनी भाई सेव। ओके, सो लेट्स ओपन हैंड आउट ऑफ लैब 4। Where is lab 4? You work. Okay. Okay. So it's a task we have uploaded. CD and explained me. I want that I will open the task from the lecture of the cell, so I could explain easily. But lab 4 task are okay. At the end, okay.
So, Lab 4 was basically LCD interface with microcontroller using C. Basically हमने शुरू में हमने इसका इंटरफेस किया था X8 हेक्स की पैड का एंड 7 सेगमेंट का, जब अब हमने इंटरफेस करना है कंट्रोलर के साथ एन LCD का. So coming to task directly, because ये चीज़ें सर ने ऑलरेडी समझाई हुई हमें. हाउ टू यूज हेडर फाइल. हेडर फाइल बेसिकली ये सर ने ये बताया हुआ कि राइट क्लिक ऑन योर प्रोजेक्ट फोल्डर ऑन सॉल्यूशन एक्सप्लोरर, के जो मैंने भी पिछले टास्क में की भी थी. फिर घूम गई. ओके ओके नहीं है इधर ही है. तो जो लैब 5. ओके सो इसके टास्क सर ने किधर बताए हुए हैं. बेसिकली इसका टास्क ये थे कि हमने इंटरफेस कराना था कीपैड और कंट्रोलर के साथ. मैं आपको डायरेक्टली, क्योंकि मुझे भी वो फाइल मिल नहीं रही जिसमें सर ने डायरेक्ट लिखा हुआ है कि आपने ये करना है, तो टाइम वेस्ट के बगैर मैं उसको यहाँ से ओपन करता हूँ. ओके नाइस. लैब 4. ये हेडर फाइल है जिसका वो सर ने एक्सप्लेन किया था पहले कि आपने इसको वहाँ पे ओपन कैसे करना है. तो इट इज़ बेसिकली वही वाली एलसीडी. बेसिकली ये दो इंटरफेसिंग है जो हमें इसमें हमें बताया पूछा गया कि एलसीडी इंटरफेस विद माइक्रो कंट्रोलर, विच बेसिकली ये. और दूसरा हमारे पास है कि कीपैड इंटरफेसिंग. सो लेट्स स्टार्ट विद कीपैड इंटरफेसिंग एंड लैब फॉर कीपैड. ओके, opening that Proteus file. Okay, so it is basically simulation. Then run it Bismillah. Okay, hex file. Sorry. Basically मैं हर बार ये फाइल इसको अपलोड करना भूल जाता हूँ. सॉरी फॉर दैट. टाइम वेस्टिंग. लैब 4 इसकी कीपैड इंटरफेसिंग एंड ये इसकी हेक्स फाइल. बिस्मिल्लाह. ओके, रनिंग फाइन. ओके सो बेसिकली हमारे पास जो इनपुट मैं दे रहा हूँ सही है, वही इस पे शो कर रहा है. 6 है, 4 है, 3 है एंड सॉरी 4 है. तो से बेसिकली इट इज़ वर्किंग फाइन. हम इसे जो इनपुट दे रहे हैं कीपैड पे, इट इज़ शोइंग ऑन एलसीडी. सो बेसिकली इसका पर्पज़ ये था कि हमने हेक्स कीपैड इंटरफेस विच इज़ बेसिकली वर्किंग फाइन. ओके देन क्लोजिंग दिस. Now opening its second part, which is LCD interfacing. सो इसकी एनिमेशन भी हमारे पास बिल्कुल ठीक चल रही है. एलसीडी इज वर्किंग बिल्कुल ठीक. एनिमेशन हमारे पास ठीक चल रही है. So we are done with lab 4 and now opening lab 5. Okay, timers and counters. ये तो वीडियोस हैं. lab 4 it was there 28. Okay, sugar. Okay, so we start basically using timers, counter, interrupts. Okay, interrupts वाली लैब है ये. So इसमें हमने basically इसमें ये timers का introduction सर ने दिया शुरू में कि the timers are the heart of automation. We have seen in previous chapters how we could take
and an input before mathematical function on the data and perform an action. Timers give us an extra level of control by giving us not only control over what happens but when it happens. So basically इसमें हार्डवेयर तो हम यूज में ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हैं. टास्क पे आते हैं डायरेक्ट. एक्टिविटी नंबर 1 थी इसमें राइट अ प्रोग्राम यूजिंग अ टाइमर टू जनरेट a 500 hertz square wave frequency on pin port C and then examine the frequency using the oscilloscope, modify the count value to make sure that frequency is active. अब oscilloscope तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता, तो वहाँ पर जो पड़ा हुआ है इसमें भी दिखा सकता हूँ. तो लैब 5 के दो थे, एक क्लॉक था और एक काउंटिंग और एलसीडी था. ओके सो दिस डिमांड प्रोड्यूस 8.9. तो मैंने इसको पहले भी अपडेट करने की कोशिश की थी जो कि नहीं हो रही थी. मैं आपको उसका बेसिकली एडमिन मी कोड दिखा देता हूँ. Why it is not opening? Okay. ओके सो बेसिकली अब ये नहीं चल रही है. अब इसका मैं इस टाइप में कुछ नहीं कर सकता. नाइस. आई होप सो ये प्रोटीस 8.9 पे ना हुई हो. शुक्र है ये चल रही है. Polygon LCD, yes, X file upload it. सो शुक्र है ये भी हमारे पास सही काम कर रहा है. देखें यहाँ हम इसको काउंटिंग कर रहे हैं और इस काउंटिंग बिल्कुल ठीक आ रही है. इट इज़ बेसिकली अल्टरनेटिव चल रहा है 1 2 3 4 5 and then 6. So basically simulation is working fine. Now coming to lab number 6, SPI and UART. ये बहुत मुश्किल लैब थी जो हमसे आई थिंक सो एक टास्क हुआ था और एक नहीं हुआ था. एंड लोग में जाते हैं डायरेक्टली क्योंकि पावर पॉइंट लेक्चर में सर ने बेसिकली उसको एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है. डायरेक्ट टास्क पे आते हैं. टास्क आर नॉट देयर आई गेस. तो टास्क नंबर 10 लग जाएगा इसलिए मैं डायरेक्ट लैब भी खोल लेता हूँ. SPI इसमें अब मास्टर कोड है, स्लेव कोड है. दिस स्लेव कोड so it was basically we connected used the two controllers. Sorry for that, my pointer is not working fine. Sorry for that. Can explain like this. Okay, working fine now I guess. Okay, दोनों की हेक्स फाइल अपलोड करनी है. सॉरी इसकी तो अपलोडेड है. Why it is not working?
ओके, सो इसकी पिछली लैब की फाइल ऐड हुई हुई थी, हमने लैब की इसकी करनी है एसपीआई की मास्टर हेक्स फाइल। ओके, इसकी भी रहती है। Now it is working fine. And meeting now. Okay, okay. So basically, the simulation is now working fine. Okay, now coming to lab 6 UART. Yeah. ओके, नाउ जस्ट शुक्र है सही तरह काम कर रही है, प्रोबेबिलिटी सब चीज़ें वर्किंग। सो वी आर डन विद लैब 6 एंड लैब 7 का हमने परफॉर्म नहीं कर पाए थे, हमसे सिमुलेशन नहीं चली थी। सो लैब 7 इज़ नॉट देयर एंड देन कमिंग टू लैब 8। So lab 8, let me open the manual. ADC. So it was basically the lab of temperature sensor LM35, which we also wasted very time on university. इस पे हार्डवेयर पे भी हमने 3-4 घंटे लगे थे क्योंकि वो धोखा है। यूनिवर्सिटी में जो हमारे पास LM35 था वो इतना काम नहीं कर रहा था, तो इट वाज नॉट मीटिंग टेम्परेचर लाइक इट शुड। सो हम डेक टास्क ओपन करते हैं इसका। ओके, अब ये भी हमने किसी दोस्त के लैपटॉप पे हमने उन दिनों में की थी। मेरे पास से पड़ी है वो 8.9 की पड़ी हुई है और ये खुल नहीं रही मैं, क्योंकि मेरे पास 8.6 है। मैंने आज कोशिश की थी कि इसको अपडेट करने की, लेकिन ये नहीं हुआ था। आपको यहाँ से भी दिखा दूँ कि ट्राई टू डाउनलोड इट फ्रॉम हेयर but the error occur and this error occurring again and again. So मैं बस पढ़ी तो है लेकिन मैं शो नहीं कर सकता लैब एड। अब जो बाकी लैब थी वो हमारी उस पे FGP बोर्ड पे हमने की थी, which was embedded system लैब। तो वो अब उसके टास्क मेरे पास नहीं पड़े क्योंकि हमने वो यूनिवर्सिटी के पीसी पे हमारे दो दो ग्रुप से हमने मिल के वो किए थे। तो उसके टास्क तो वहाँ पे ही हमारे पास पड़े हुए हैं, हमने वीडियोस वहाँ पे बनाई थी, तो आई विल अपलोड द वीडियोस। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।